Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, अर्थनीति और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं वी रवि कुमार। Equity benchmarks gain around 2% in sync with firm trend in global markets. Sensex closes at 37,688 and Nifty settles at 11,095. Asian stocks surge amid strong U.S. manufacturing data, and gold prices rise to 54,830 rupees per 10 grams in the national capital. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों पर घरेलू बाजार में जोरदार लिवाले, लगभग 2% बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 37,688 पर बंद हुआ, निफ्टी 11,095 दर्ज हुआ। अमेरिका से आए मजबूत विनिर्माण संबंधी आंकड़ों से एशियाई शेयर बाजारों में भी अच्छी खासी तेजी आई और दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य बढ़कर 54,830 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक लगभग 2% बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 748 अंक यानी 2.03% की बढ़त लेकर 37,688 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 204 अंक यानी 1.87% की बढ़त के साथ 11,095 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी तेज रही। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर दिखा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.02% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.23% की वृद्धि हुई। Domestic equity benchmarks today soared around 2%, led by massive buying in index majors, Reliance Industries and HDFC Bank amid heavy foreign fund inflows and a positive trend in global equities. The BSE Sensex settled 748 points or 2.03% higher at 37,688, while the NSE Nifty rallied 204 points or 1.87% to end at 11,095. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small cap underperformed the Sensex. The mid-cap closed 1.02% up and the small cap gained 1.23%. Reliance Industries was the top gainer in the Sensex pack, surging around 7%. HDFC Bank jumped nearly 4% after the RBI approved the appointment of Shashidhar Jagadishan as Managing Director and CEO of the bank for a period of 3 years. Maruti, Axis Bank, HDFC, ICICI Bank and Bajaj Finance also finished with gains. On the other hand, Tech Mahindra, IndusInd Bank, HCL Tech, Ultratech Cement and Infosys were among the laggards. According to traders, stock-specific action in index heavyweights drove the markets higher. Further, strong foreign funds inflow and positive cues from global markets cheered investors. Exchange data showed that foreign institutional investors purchased equities worth 7,818 crore rupees on a net basis. Sushma, there's this talk about global liquidity that the markets are moving up because internationally the interest rates are almost close to zero and therefore a lot of money is there. But if you look at the data, almost 70,000 crore rupees went out because of FII selling in March and April. And if you take May, June and July, all these 3 months put together, only around 20,000 crores has come back, yet the markets have spiked by almost 50% from their lows. What do you think is driving the current rally, at least the today's rally, if you might talk about Well, that? today's rally is there's very specific factors.
First of all is the fact that, as you have mentioned, both Reliance and HDFC Bank seem to be the drivers of the market. Reliance, the reports have come in that they are close to tying up a deal with Future, and that will really increase their footprint in the retail segment. Secondly, HDFC, the news about the new CEO has really cheered the market because this means, a kind of continuity in the top management of HDFC. This is the successor, an insider of HDFC Bank, person selected by the HDFC board, and the RBI board has approved it. So these are the two factors as far as domestic issues are concerned. I think the third domestic factor, of course, is auto sales, because auto sales have picked up, and definitely there's, it's certainly a bright spot in the entire manufacturing area. So auto sales is another area where, of course, it's pent-up demand, which has, shown itself in July, but it is expected to, even the car manufacturers are saying that this demand is expected to continue right up to the festive season. As far as global cues are concerned, yes, the international factor is there. That, the information that U.S. manufacturing activity has risen to an 18-month high. And that has pushed not only the U.S. market, but definitely the positive sentiment over there has affected our domestic markets here. And that, of course, has also driven the Asian stocks, which have also been pushed up today. So that's, the general feel-good feeling of not just the global cues, but also in the domestic market. I think that's what has affected the market and given a rally after 4 days of losses. सुषमा जी, यदि हम मानसून की ओर आपका ध्यान खास तौर से ले चलना चाहें और बारिश की जो कह लें कि बारिश का जो स्प्रेड रहा है, जो पूरे देश से आंकड़े आ रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर ऑटो के अलावा और कौन-कौन से क्षेत्र आपको दिख रहे हैं जहां ब्राइट स्पॉट या सिल्वर लाइनिंग दिख सकती है? देखिए, सिल्वर लाइनिंग तो हर क्षेत्र में होगा. पहली बात तो ये है कि जीएसटी के जो कलेक्शंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि नियरली 80-90% ऑफ नॉर्मल टाइम्स हो गए हैं. ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. ई-वे बिल्स भी बढ़ गए हैं. तो ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी है, नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये मतलब वी आर इंचिंग टुवर्ड्स दैट. तो अगर आप देखें कि स्पेसिफिक सेक्टर्स, डेफिनेटली ऑटोमोबाइल्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है. उसमें टू व्हीलर्स और पैसेंजर कार्स में अभी पिकअप हुआ है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स में अभी तक नहीं हुआ. ट्रैक्टर्स तो खैर वैसे भी इन 3 महीनों में काफी बॉयंट सेल्स हुई हैं. तो ऑटोमोबाइल्स का तो है ही है. दूसरा, सिर्फ रिटेल सेगमेंट अभी थोड़ा सा धीमे चल रहा है. इतना उसमें कोई इतना फास्ट एक्सेलरेशन नहीं हुआ है. तो जो मॉनसून की बात करें तो मॉनसून का अभी थोड़ा प्लेटो हुआ है, लेकिन अनुमान ये लगाया जाता है कि वेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि आगे वाले दिनों में ये बढ़ जाएगा. जो जुलाई में बहुत अच्छी बारिश, जैसे जून और जुलाई में अच्छी बारिश हुई, लेकिन एंड ऑफ आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में इतनी अच्छी नहीं हुई. लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्रेडिक्शंस ये हैं कि अगस्त और सितंबर में अच्छा रहेगा. तो उससे डेफिनेटली फेस्टिव सीजन तक डिमांड का पिकअप होगा. और ये मेरे ख्याल में सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं होगा, ये ऑल राउंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा. Sushma, if you see the Nifty P, the historical P has traditionally, I mean, if you see the last 4-5 years data has been closer to 20, and currently it is around 30. Of course, there are some movements in the Nifty. Nestle came in, and that's a high P stock that could have probably contributed. But does that worry you that the Nifty is currently at a P valuation of almost 30? No, not really. Actually, what has happened is the markets have actually rallied a lot in the last few months. And in fact, the stock markets have rallied, I think, in defiance of what is the economic scenario. And the last few days, you have seen, downtrend, and that was, I think, a more realistic assessment of what is the situation. So I would not be worried about the PE ratios really.
Right now, we really have to look at the state of the entire market, and I think that the last few days of correction was much needed, and of course, the rally today again is once again in response to the positive cues that are coming from all sides. I mean, the news that is coming from within the country, the news that's coming without the country. So, but I suspect that you are going to have more correction in the days to come. सुषमा जी, हम आपका ध्यान, हमारे कई बार जो श्रोता होते हैं, नए श्रोता होते हैं, कई श्रोता होते हैं जो तकनीकी शब्दों को नहीं जानते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये पीई रेशियो, पीई वैल्यू क्या दर्शाता है और निवेशक इससे क्या ग्रहण करते हैं। ये प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है जो किसी भी एक कंपनी का, उसको अगर आप डिवाइड करें, डिवाइड इट अमंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो उसका वैल्यू क्या होगा, आपके एक शेयर का वैल्यू का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, इसको हम प्राइस अर्निंग्स पर शेयर कहते हैं, अर्निंग्स पर शेयर कहते हैं, ईपीएस एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो जो कहते हैं। Sushma, if you look at the MPC, the meeting that I guess started today, in the last two sessions we saw almost 115 bips cut, but ever since that inflation has slightly marginally inched up. What do you expect that this MPC would bring? Another rate cut? Well, that is yet to be seen, but I think inflation is not the worry right now. Inflation is, I think, the least of the worries right now, with considering the fact that the economy is contracting. It's actually, we are looking at a contraction which is ranging from various estimates from 3 to 7%. So I think that the MPC will take that into account. Whether they would like to, I don't know whether reduction, a further reduction in rates is going to stimulate investment activity. I think they really have to take a more holistic view. They could expect more to come from the government rather than from the RBI. So I really would not like to make a prediction at this stage, but I don't think that inflation is going to be a significant factor in the calculations. सुषमा जी, हम आपका ध्यान बैंकिंग सेक्टर की ओर ले चलना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि हाल में जो कुछ खबरें आई हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक हैं, उनमें भागीदारी अपनी कम करने पर सरकार विचार कर रही है। तो ऐसे में निवेश की दृष्टि से बैंकिंग सेक्टर के ये कह लें कि शेयर कैसे रह सकते हैं आने वाले दिनों में? अब देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में सरकार ने काफी कदम उठाए हैं। अभी मर्जर्स किए हैं, काफी सारे जो छोटे छोटे बैंक्स, उनके अभी मर्जर्स किए हैं। अभी ये कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो रहा है, और सिर्फ ये है कि और एनपीएस भी कम हो रहे हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि इस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और क्रेडिट ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, और दूसरी बात ये है, ये जो सरकार ने मॉरेटोरियम लगाया है पेमेंट्स लोन्स के ऊपर, उससे बैंक्स को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है और वो चाह रहे हैं कि ये मॉरेटोरियम अब सरकार को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये जो रीपेमेंट की प्रॉब्लम अब इसके बाद आएगी। तो अभी मेरे ख्याल में बैंक्स का जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म फ्यूचर है वो तो बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग टर्म में तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही इन्वेस्टमेंट एरिया है, तो और हमेशा रहेगा मेरे ख्याल में। The other thing, Sushma, that the entire world is looking at is the vaccine for coronavirus. And in fact, if you see Pfizer, Moderna internationally are quite close at various stages of the vaccine trials. And India also, Sun Pharma today launched a tablet for treatment of, not a vaccine, but a tablet for treatment of the coronavirus. How significant would an actual vaccine be, or is that already priced into the markets? No, I think that would definitely be significant. Of course, the market has, in fact, today, of course, we've seen that pharma stocks have risen.
And that is not just because of Sun Pharma's tablet, but also because of the progress of the corona vaccine in many parts of the world, not in India, in Oxford, in the US. In so many parts of the world, the human trials are now starting. And that gives hope that in the first quarter of 2021, we should get a vaccine. I think the market has not, of course, there is obviously a surge whenever there is news about the vaccine, but I wouldn't say that the market has really factored that in. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं वैश्विक बाजारों पर। सबसे पहले ध्यान दें एशियाई शेयर बाजार पर, जहां आज दिवाली तेज रही है। अमेरिका से आए मजबूत विनिर्माण संबंधी आंकड़ों का निवेशकों पर अच्छा असर देखने को मिला। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.7% लाभ के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.3% ऊपर आ गया। हांगकांग के हेंगसेंग में 2% की शानदार तेजी आई। उधर सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 1.2% लाभ के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक नरमी का माहौल बना हुआ था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 बिना किसी उतार चढ़ाव के बना हुआ था, जबकि फ्रांस का कैक 40 0.2% नीचे कारोबार कर रहा था। उधर जर्मनी का डैक्स 0.7% नीचे चल रहा था। If you look at the U.S. market, Wall Street's main indices rose yesterday as a rebound in multi-billion-dollar deals, including Microsoft's pursuit of TikTok's U.S. operation, lifted sentiment as efforts to hammer out a coronavirus relief bill resumed. Dow Jones gained 0.9% and the S&P 500 climbed 0.7%, while the Nasdaq Composite Index surged 1.5%. Sushma, how important is this Microsoft's pursuit of TikTok in the U.S.? In fact, today Donald Trump has even said that the U.S. government wants a slice of the amount that will be settled between the two organizations. How important is this from the U.S. market's perspective? From the U.S. market perspective, it's very important because, first of all, this will mean that Microsoft for the first time is entering into the area of social media. It has nothing to do with social media, but they're trying to get into social media, and this will enable them to do so. Secondly, of course, there are a lot of questions raised by if they do finally acquire TikTok in the U.S. How does it function as far as data is concerned? Will data of ByteDance be located in China or for this entity, or will it be located in the U.S.? And I think Australia is also included in this deal. So there are a lot of questions, first of all, there. And lastly, of course, what you mentioned is that the United States is thinking that, we also need a share of this, in the sense that as far as taxation is concerned, we need to get into this whole deal and get a slice of it. In this, one must see this in the context of the fact that big tech is doing phenomenally well as far as profitability is concerned during the pandemic. And, Facebook, for instance, has had 90% profits over this period, over the last quarter, and so has Amazon, and Microsoft has also had, very high profits. So their profitability is so high that obviously the U.S. government is thinking that if they're entering into this deal, which is, of course, not viewed very favorably by the U.S. government, because they are really keen to ban TikTok like India did. But they are presuming that if Microsoft does buy it, then they will be able to control this organization, this institution. Again, from the Indian perspective, we have to see we have banned TikTok as well as other Chinese apps. We really would like that the U.S. to be on board to have the same approach towards the Chinese apps as we have had. So I think probably India is watching this. The Indian government must be watching this whole deal very closely. सुषमा जी, हम यहाँ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे विशाल बाजार कह लें डेटा का, यानी आंकड़ों का जो निर्मित हो रहा है विशेष रूप से सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से, उनमें भारत कहाँ खड़ा होता है? भारतीय कंपनियों की क्या स्थिति है और उनके लिए कैसे अवसर बन सकते हैं?
अब देखिए, इस वक्त जो सोशल मीडिया है वो तो डोमिनेटेड है, जो कंपनी जिनको हम बिग टेक कहते हैं, फेसबुक है, गूगल है, एप्पल है, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट, तो ये जो कहते हैं बिग टेक, तो डेटा इश्यूज उनकी, हमारी और उनके बीच ये बातचीत यही है कि डेटा आप कहाँ रख रहे हैं और हमारा डेटा आप लेके कहाँ रख रहे हैं, वो डेटा हमारे ही देश में रखना चाहिए। तो इसके ऊपर अभी बातचीत हो रही है। दूसरी बात ये है, डेटा के अलावा न्यूज के बारे में ऑस्ट्रेलिया ने उनको कहा है, ये गूगल और फेसबुक, कि आप जो खबरें छापते हैं अपने इंटरनेट में, आपने गूगल सर्च में, तो आप हमारी न्यूज मीडिया से लेके छापते हैं और उसको कहते हैं कि गूगल न्यूज है और फेसबुक न्यूज है, तो इसके लिए आपको पेमेंट करना चाहिए। तो ये एक और मुद्दा है जो इंडिया नहीं, सिर्फ बाकी देश भी देख रहे हैं विश्व भर में। तो ये और बाकी डेटा की बात है, डेटा के बारे में काफी इस वक्त कंसर्न्स हैं, डेटा प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इतना सारा डेटा लेके हमारा जो इंफॉर्मेशन जो हम बड़े कैजुअली अपने सोशल मीडिया में बता देते हैं और वो इसका इस्तेमाल लेके एडवर्टाइजर्स को दे देते हैं। तो ये इसके बारे में सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है और इसके बारे में काफी बातचीत हुई है बिग टेक के साथ। सुषमा जी, यहाँ पर इसी सवाल को मैं दूसरे कह लें कि दृष्टिकोण से, दूसरे एंगल से आपसे समझना चाहूंगा। भारतीय कंपनियां ऐप के बाजार में या कह लें सोशल साइट्स निर्माण के बाजार में क्यों नहीं सफल हो पा रही हैं, क्यों नहीं उतर पा रही हैं और वो अपनी हिस्सेदारी किस रूप में निभा रही हैं? देखिए, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो मेरे ख्याल में इस वक्त हमने, मतलब इस वक्त नहीं, काफी सालों से हमने कोशिश नहीं किया कि हम इनोवेटिव एप्स वगैरह, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हमने ये कोशिश नहीं किया कि हम बहुत बड़े जो एप्स हैं जैसे गूगल फेसबुक वगैरह में है, जैसे टिकटॉक बना हुआ है, वैसे हमने ऐसे कुछ बनाया नहीं है। और लेकिन हमारे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वहां अमेरिका में बैठ के या ब्रिटेन में बैठ के ये बड़ी कंपनीज में हमारे इंजीनियर्स ये ऐसा मतलब काम कर रहे हैं और अच्छी अच्छी एप्स बना रहे हैं। लेकिन हमारे देश में मेरे ख्याल में हमारे इतने सोशल मीडिया में इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ जितना शायद होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 3 पैसे कमजोर हुआ, 75 रुपए 4 पैसे पर आ गया। रुपया किस दिशा में जाता दिख रहा सुषमा जी आपको? देखिए, रुपया तो इस वक्त मैं समझती हूँ वैल्यूएशन ठीक है, और अगर थोड़ा सा अगर डिप्रिसिएशन हुआ भी तो इस वक्त हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए और इस वक्त हमारी इंपोर्ट्स थोड़ी कम है, तो इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर फर्क तो पड़ेगा, और जो खासकर ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन जैसे चीन करता है कि अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करके अपने एक्सपोर्ट्स को ज्यादा कंपेटिटिव बनाता है, हमें भी इस तरह, इस पर्सपेक्टिव से रूपी का डिप्रिसिएशन देखना चाहिए। आपने निर्यात की चर्चा की सुषमा जी, निर्यात के अवसर कोरोना की इस अवधि में कहाँ आपको दिख रहा है, किन क्षेत्रों में दिख रहा है जहाँ हमारे उत्पाद पहुँच सकते हैं और अर्थव्यवस्था को कुछ गति मिल सकती है? हाँ, निर्यात इस वक्त हमारा इनफैक्ट अच्छी थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है फाइनली, लेकिन अगर हमारी जो मार्केट्स हैं वहां पर रिसेशनरी ट्रेंड्स हैं। अगर आप यूरोप देखें तो अभी वहां डिमांड इतनी बढ़ी नहीं है। अमेरिका में तो फिर यूएस में जो अभी हमने जो खबर आई है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, तो उससे तो पता ये चलता है कि डिमांड तो आ रही है। तो अब ये हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट्स है, अगर जैसे जैसे वहां पर डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे एक्सपोर्ट सेल्स बढ़ेंगे, और खासकर कुछ क्षेत्र जैसे है फार्मा में हम पहले भी अच्छे कर चुके हैं और अब ज्यादा ही डिमांड आ रही है हमारे चीजों की। जैसे पहले हम कभी पीपीई किट बनाते नहीं थे, अब हम पीपीई किट बनाते भी हैं और निर्यात भी करते हैं। तो ये तो नई इनोवेटिव सॉल्यूशंस आ रही हैं।
और मेरे ख्याल में जैसे जैसे बाहर की ग्लोबल डिमांड थोड़ी बढ़ती है उससे काफी फायदा होगा और कम्पिटिटिवनेस अगर हमारी रूपी की डिप्रिसिएशन थोड़ी सी और हो जाए तो फायदा होगा एक्सपोर्टर्स को। सुषमा जी, यहाँ पर एक सवाल और हम समझना चाहेंगे कि किन क्षेत्रों के लिए किस तरह के प्रोत्साहन उपायों की आवश्यकता आपकी दृष्टि में है जहाँ निर्यात के मोर्चे पर देश बेहतर प्रदर्शन कर पाए? देखिए, एक्सपोर्ट जो क्षेत्र है वो ज्यादातर बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव हैं और इस वक्त जैसे गारमेंट क्षेत्र है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, हैंडीक्राफ्ट्स है और फैक्ट्रीज में भी जो है, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, वहां पर भी लेबर इंटेंसिव हैं। तो इसमें इस वक्त थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि जो काम करने वाले लोग थे वो वापस गांव में चले गए थे लॉकडाउन के बाद। अब ज्यादातर लोग वापस आ रहे हैं वापस, लेकिन ये जो लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है वहां पर थोड़ी सी इनको दिक्कत हो रही है इस वक्त। गारमेंट, जैसे मैंने कहा, गारमेंट इंडस्ट्री और ये स्किल्ड आर्टिसन होते हैं, ये मतलब आम वर्कर नहीं कर सकता, ये स्किल्ड वर्कर को ही करना पड़ेगा। तो वापस लोग आ रहे हैं, जैसे गुजरात में, सूरत में बहुत सारे ये क्षेत्र हैं वहां पर। तो इसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल मदद करनी पड़ेगी सरकार को कि ये जो वर्कर्स हैं कैसे उनको वापस लाया, कैसे उनको इंसेंटिव दें कि वो वापस आ जाएं और अपने फैक्ट्रीज में फिर से ये काम चालू कराएं। तो ये तो प्रोडक्शन, ये जो कुछ वर्कर्स के इंसेंटिव देने पड़ेंगे इस वक्त। If you look at the oil market today, global crude oil prices fell on fears about the economic fallout from rising COVID-19 cases around the globe. Crude prices also fell amid oversupply worries as OPEC and its allies are set to wind back output cuts in August. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $43.40 per barrel, while WTI crude prices were around $40.40 per barrel. Sushma, we saw data coming in that the fuel demand fell almost 8% in June this year, and the imports were lowest in over 5 years. And the crude oil, obviously that's because of the slowdown that we are facing. That's a very unique situation. As the situation improves, as the economy improves, do you see the crude oil prices also moving up northwards? But as of now, $43 is a reasonable price for India to import at. And I would imagine that there will be some oversupply because in August, the Saudi Arabia as well as many other OPEC countries are going to stop their voluntary production cuts. So you will have a situation of excess supply, and demand as a result of the pandemic has not picked up, as before. That's one of the worries in the global market, which you yourself mentioned. So insufficient demand, oversupply. I think this is the situation. If the voluntary cuts are going to stop in August, as has been decided upon, then I think for the next 2 or 3 months we can see a weakening of oil prices. And as far as India is concerned, that is all to the good. आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के मूल्यों में थोड़ा सा अलग अलग रुख देखने को मिला है। सोने का मूल्य आज 97 रुपए बढ़ा 54,830 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, लेकिन चांदी बिना किसी उतार चढ़ाव के 66,855 रुपए प्रति किलो पर टिकी रही। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के मूल्य में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। सोना $1,975 प्रति औंस पर रहा, चांदी $24.31 प्रति औंस पर आ गई। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you, Manoj. Thank you, Sushma. Before we close, a reminder of the headlines. Equity benchmarks gain around 2% in sync with firm trend in global markets. Sensex closes at 37,688 and Nifty settles at 11,095. Asian stocks surge amid strong US manufacturing data. And gold prices rise to 54,830 rupees per 10 grams in the national capital. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.
Market Mantra. Market Mantra.